हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोगों ने एडिटोरिया करंट अफेयर्स की किताब कवर करना स्टार्ट किया था, जो कि ईयरली बुक है दोस्तों। नवंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक इसमें कवर किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट किताब है ये। और हमने ऑलरेडी जो है नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में जितने भी वन लाइनर्स हैं वो हमने पढ़ लिया है। तो आज का जो रहेगा दोस्तों, हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसका सेकंड भाग रहेगा, सेकंड पार्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। इसको थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिखाई दे। राइट, 1 मिनट। ओके, तो पहला मंथ है हमारा नवंबर 2022। ऑन 1 नवंबर 2022 द अफ्रीकन कंट्री घाना अज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दोस्तों जी हाँ, घाना को जो है एक प्रेसिडेंसी दिया गया है फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। रिसेंटली परमा क्राइसिस हैज़ बिन इलेक्टेड एज कॉलिन्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर। तो इस साल का जो कॉलिन डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर क्या सेलेक्ट किया गया? परमा क्राइसिस। द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन इन द वर्ल्ड हैज बीन रन इन स्विट्जरलैंड। इट्स लेंथ इज अबाउट 2 किलोमीटर विथ 100 कोचेस। लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन है दोस्तों, 100 कोचेस इस पर रहेंगे। इसकी सिर्फ लेंथ ही रहेगी आपको 2 किलोमीटर की। नेक्स्ट है हमारा अक्टूबर 2022। इंडियाज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन पार्टिसिपेटेड इन द डकार इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड सिक्योरिटी इन अफ्रीका, जो कि सेनेगल में हुआ था। Global Youth Climate Summit was organized on 22nd October in Khulna, Bangladesh. Its aim is to unite youth in tackling the climate crisis हो गया। Recently, Tesla company CEO Elon Musk has bought Twitter for $44 billion दोस्तों। Okay. Recently, India signed agreement with Singapore for export of green energy from 2025. The meeting of Counter-Terrorism Committee of the United Nations Security Council was held in Mumbai for the first time. The meeting was chaired by Ruchira Kamboj, permanent representative of India to the United Nations दोस्तों। In the year 2023, the 12th World Hindi Conference will be organized in Fiji. India was represented in this by the External Affairs Minister S. Jaishankar. This conference is organized once in 3 years दोस्तों, मतलब 3 साल में एक बार इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। The first India ASEAN Startup Festival was organized in Bogor, Indonesia. It aims to enhance cooperation in the field of science, technology and innovation between India and ASEAN countries. Recently, China and Pakistan have started construction of 3 corridors in health, digital and green sectors. Recently, Sarang Utsav 2022 was organized by Indian Embassy in South Korea. It is a festival showcasing in Indian culture. During the Russia-Ukraine war, Russia occupied 4 regions of Ukraine. जी हाँ, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia and Kherson region दोस्तों। पहले 2 ऑक्यूपाई किए थे इन्होंने, और आगे बढ़कर जो है और 2 रीजन्स पे कब्जा कर लिए हैं। India signed an agreement with Armenia फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स वर्थ मोर देन 2000 करोड़। जी हाँ मैम, एक्सपोर्ट करेंगे अभी आर्म्स अर्मेनिया को कि 2000 करोड़ तक करीब उसकी वैल्यू रहेगी। द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल चार्जिंग पोर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन यूरोपियन यूनियन बाय 2024। द इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑब्जेक्टेड टू द यूएस एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम्स विजिट टू पीओके ड्यूरिंग पाकिस्तान विजिट। Military coup in Burkina Faso on 30 September 2022 was taken over by the army captain Ibrahim Traoré दोस्तों। Captain Ibrahim Traoré officially became the president of Burkina Faso. Recently, the Global Forest Sector Outlook 2050 report was released by FAO. Recently, the Poverty and Shared Prosperity 2022 report was released by World Bank. Recently, the Education 4.0 India report was jointly launched by WEF, UNICEF and UA. The Planet Report 2022 was released by World Wild Fund, and Kazakhstan renamed its capital again from Nur Sultan to Astana दोस्तों। The 5th Assembly of International Solar Alliance was held in New Delhi from October 17 to 20, and External Affairs Minister S. Jaishankar launched the book, that is Modi at 20 Dreams Meet Delivery in New Zealand, and MOU was signed between National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Japan, and All India Institute of Ayurveda, India, for enhancing technical capabilities of educational institution. ICC has partnered with UNICEF to empower women and promote gender equality. Or FATF has recently removed Pakistan from the grey list in 2018, and Pakistan was placed in the grey list. Cyclone Sitarang in the Bay of Bengal affected West Bengal and Bangladesh. It is named by Thailand दोस्तों।
WHO has issued a medical product alert on 4 cough and cold syrup दोस्तों, जो कि मेड इन फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया था, क्योंकि 66 चिल्ड्रन इनकी डेड हो चुकी थी दोस्तों गाम्बिया में, ओके, इसीलिए. एंड फॉर इट्स इन्वेस्टिगेशन 4-member कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर YK गुप्ता. The 6th East Asia Education Minister Summit was held in Hanoi, Vietnam. India-Africa Defense Dialogue was held during DEF Expo 2022 in Gandhinagar. Noted Hollywood actress Anna May Wong became first Asian American to appear on the US currency दोस्तों, $2 में. FATF has decided to add Myanmar to the blacklist. Okay, चलिए. Next है, the UAE government launched the first of its kind initiative Bread for All, and the 2022 annual meeting of the IMF and World Bank will be held in USA. सितंबर की बात करें तो कजाकिस्तान टू चेंज द नेम ऑफ कैपिटल फ्रॉम नूर सुल्तान बैक टू अस्थाना दोस्तों, क्योंकि पहले उन्होंने अस्थाना से नूर सुल्तान शिफ्ट किया था, अभी वापस फिर अस्थाना को इन्होंने अपने कैपिटल शिफ्ट कर लिया है. इंडिया एंड इजिप्ट साइंड एन MOU to enhance cooperation in the field of defense. Recently, a street in Canada has been named after famous Indian musician A.R. Rahman. This is also very, very important. Recently, during the visit of Indian Defense Minister Rajnath Singh to Mongolia, the President वहाँ के जो मंगोलिया के gifted him a horse named Tejas. याद रख लीजिए. South Africa was chosen as host country of the BRICS Summit for the year 2023. This is also very, very important. Bharat Petroleum Corporation Limited has entered into an agreement with Brazilian oil company Petrobras for the supply of crude oil दोस्तों. India and Bangladesh signed MOU in 7 sectors during the visit of Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina to India. Recently, 3 cities of India have been included in UNESCO Global Network of Learning City. क्या क्या, एक त्रिशूर है केरला का, जो कि कल्चरल कैपिटल ऑफ केरला भी कहते हैं. नीलम्बूर है केरला का, फेमस फॉर इको टूरिज्म है. वरंगल है, दैट इज कल्चर हेरिटेज है दोस्तों. उसके बाद इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर विजिटेड टोक्यो जापान फॉर इंडिया Japan 2+2 ministerial talks. Okay, so apart from Japan, India holds 2+2 talks with USA, Australia and Russia दोस्तों. Recently, India and UAE signed an MOU of cooperation in the field of education. The Food and Agriculture Organization released the Blue Transformation Roadmap 2020-23 for fisheries and aquaculture. इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ताकि इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एनकरेज कर पाएँ, एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज कर पाएँ. ओके, द 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम वाज ऑर्गेनाइज इन व्लाडिवोस्टॉक, रशिया फ्रॉम 5 to 8 सितंबर 2022, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली इसको अटेंड किया था दोस्तों. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज़ हुआ है, इसको UNDP वाले रिलीज़ करते हैं. फर्स्ट प्लेस स्विट्ज़रलैंड को दिया गया, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और इंडिया का रैंक जो है 130 है दोस्तों, दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए. ओके, ये 2020 की बात करो, अभी जो रैंक है वो 132 हो गया, मतलब और भी हम वर्स्ट कंडीशन में जा चुके हैं. World Water Congress and Exhibition 2022 was organized in Copenhagen, capital of Denmark, in which Union Minister of Jal Shakti Gajendra Shekhawat participated. India launches joint white paper on urban wastewater scenario in India with Denmark at World Water Congress Exhibition in Copenhagen. Okay. Next, Lok Sabha Speaker Om Birla unveiled the statue of Swami Vivekananda and Pandurang Kokonje in Mexico. Sri Dharmendra Pradhan holds bilateral meetings and co-chair the 6th meeting of Australia-India Education Council with Australian counterpart. Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador has proposed 3-man commission comprising Prime Minister Narendra Modi ji. Indian Oil Corporation Limited signed MOU with Bangladesh Road Highway Department for supply of petroleum products. The US has killed Al-Qaeda chief Ayman al-Zawahiri in drone strike in Afghanistan using Hellfire R9X missile दोस्तों. इंडिया के सोशल साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर रामधर सिंह was inducted into American Heritage Wall of Fame. He is the first Indian psychologist to receive this honor. UK has become the first country in the world to approve a dual vaccine for Omicron virus दोस्तों. Recently, India signed an MOU with France for cooperation in the field of transport. और Hindustan Aeronautics Limited has entered into agreement to open its first office in Kuala Lumpur, Malaysia for international marketing and business. This office will be helpful in manufacturing, servicing the Sukhoi fighter aircraft. The world's first hydrogen-powered passenger train was launched in Germany. The speed of the train will be 140 km/h and its range will be 1000 km. India signed an agreement with Nepal Investment Board for construction of 2 hydroelectric projects on Seti River in Nepal. उसके बाद US पार्लियामेंट ने
स्वीडन और फिनलैंड को अप्रूव कर लिया है ताकि वो नाटो में ज्वाइन हो सके। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्कॉटलैंड हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लेजिस्लेट ऑन प्रोवाइडिंग फ्री सैनिटरी पैड्स टू वुमेन। दोस्तों सबको फ्री दिया जाएगा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया एस जयशंकर अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी इन पैराग्वे ड्यूरिंग हिज ऑफिशियल विजिट टू अमेरिका। द 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन कैनेडा फ्रॉम 20 to 26 अगस्त। यहाँ पे हमारे लोकसभा स्पीकर के जो है उन्होंने अटेंड किया था। 17-year-old मैक रुदरफोर्ड हैज बिकम द ओल्डेस्ट यंगेस्ट पायलट टू फ्लाई फॉर 250 आवर्स इन 52 कंट्रीज। ओके, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम लिखा गया है दोस्तों। इंडिया एंड बांग्लादेश हैव साइंड एन एग्रीमेंट ऑन शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ कुशियारा रिवर, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द बराक रिवर। कुशियारा रिवर फ्लोज थ्रू असम एंड देन इनटू बांग्लादेश। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है एग्जाम में, 3 स्टार रख लीजिए इसको। फर्स्ट प्लेस जापान को गया और इंडिया का रैंक 87 है दोस्तों। उसके बाद इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद मालदीव्स टू प्रमोट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटाइजेशन इन जुडिशियल सेक्टर। ओके, नेक्स्ट हम जुलाई में आ चुके हैं। इंडिया साइंड एमओयू विद इजिप्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री इन द सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन। द फैक्ट्री विल इन्वेस्ट $8 billion एंड हैव ए प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 20,000 tons. Recently, Wasifa Nasreen became the second and the first woman from Bangladesh to scale Mount K2 दोस्तों। Right? Today conference was held in Tashkent, the capital of Uzbekistan, to discuss the situation of Afghanistan. It was attended by 20 countries. Senior diplomat JP Singh from India side दोस्तों। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग की बात करें, पहला प्लेस जाता है लंदन को। इंडियन सिटी मुंबई रैंक 103, मुंबई इज एट द टॉप पोजिशन इन इंडिया। The NATO Madrid Summit was held in Madrid, Spain from 28 to 30 June. This was 32nd edition of the conference. Apart from the member countries, Sweden and Finland were also invited to this. उसके बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन resigned from his post after scandals came to light during his power. This is also important. बोरिस जॉनसन जी को resign करना पड़ा अपनी पोस्ट से। Former Japanese Prime Minister Shinzo Abe was shot dead during an election campaign in the Japanese city of Nara. अब सभी लोग जानते हैं किस तरह से इनकी मौत हो गई है। And according to the World Food Security and Nutrition Status Report released by United Nations, the number of people affected by hunger is 828 million दोस्तों। In the year 2021 की बात कर रहा हूँ। और जो भी माल नोरिश पीपल हैं इंडिया में, उनकी संख्या है 224.3 million. This is very important. Okay. Recently there was cooperation between India and Australia on rare earth elements, especially lithium. So Australia produced 55% of the world's lithium दोस्तों। सबसे ज़्यादा वहाँ पे मिलता है लिथियम का। Next, recently Elon Musk has cancelled $44 billion deal to buy Twitter, or India has been selected by UNESCO to the Intergovernmental Committee on Intangible Cultural Heritage for the period 2020-26. Its object is to highlight the cultural heritage of India at national and international level दोस्तों। एशिया पैसिफिक सस्टेनेबल इंडेक्स की बात करें, जो इशू किया गया था इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक, पहला प्लेस जाता है सिंगापुर को, और इंडियन सिटी बेंगलुरु का जो है वो रैंक है 14th रैंक। India's Lieutenant General Mohan Subramaniam was appointed as new military commander of United Nations mission in Sudan. याद रख लीजिए, ओके। नए मिलिट्री कमांडर बने हैं सूडान के। According to a recently released global report, India ranked 3rd in the world in renewable energy production. China is in the first place and America is the second place. okay. इसका ग्लोबल स्किल रिपोर्ट रिलीज हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला प्लेस जाता है स्विट्जरलैंड को, रैंक ऑफ इंडिया 68, और वेस्ट बंगाल रैंक फर्स्ट अमॉन्ग इंडियन स्टेट्स। नेक्स्ट हम आ चुके हैं जून 2022। इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड एज कंट्री फॉर ऑफ द ईयर फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्टार्टअप अक्रॉस द वर्ल्ड एट विवा टेक 2020, और लार्जेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस हुआ था यूरोप में। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड मैंगो फेस्टिवल इन ब्रसेल्स बेल्जियम टू इंक्रीज द मार्केटिंग ऑफ इंडियन मैंगोस इन यूरोप। तो मैंगो फेस्टिवल ले आया था। उसका बाद अनदर रिपोर्ट आ गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स कहा जाता है इसको, जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज़ किया गया। मोस्ट लिवेबल सिटी वियना ऑस्ट्रिया है दोस्तों। रैंक ऑफ दिल्ली इज 112, 112। लीस्ट लिवेबल सिटी कराची पाकिस्तान, ढाका बांग्लादेश। उसके बाद 14th ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड वर्चुअल इन 23 जून 2022, जो कि चाइना ने इस बार होस्ट किया था। एंड इस साल का जो थीम था, प्रोमोटिंग ए हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, अशर इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। उसके बाद मीटिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ कंट्रीज वॉज हेल्ड इन रवांडा
from 20 to 25 June. The Indian delegation was led by External Affairs Minister S. Jaishankar. A meeting of G7 countries was held on 26 June 2022 in Bavarian Alps, Germany. This country announced $800 billion in an aid in developing countries to tackle climate change. The 5-day United Nations Ocean Conference was organized in Lisbon, that is the capital of Portugal, on 27 June. It was hosted by Portugal and Kenya, and Union Minister Jitendra Singh led the Indian side. An initiative called Partners in the Blue Pacific was launched by USA, Australia, New Zealand, Japan and UK. It aims to counter China in Indian Pacific Ocean region. Another report, this is also important, Global Peace Index कहा जाता है, इसको रिलीज करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस सिडनी की. पहला प्लेस गया था आइसलैंड को दोस्तों, और इंडिया का रैंक है 135. दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट प्लेस अफगानिस्तान. World largest freshwater fish stingray has been discovered in Mekong River in Cambodia. Our Russian journalist Dmitry Muratov has sold his Nobel Peace Prize for helping children in Ukraine. Qatar Hamad International Airport was declared the best airport in the world at the Skytrax World Airport Awards held in France. Ruchira Kamboj has been appointed as next permanent representative of India to United Nations, succeeding T.S. Trimurti दोस्तों. The largest bacteria ever discovered in the mangrove swamps of Caribbean 2 group, named Theomargarita magnifera. It is 5,000 times larger than other bacteria that can be seen with naked eye. कितने? 5,000 times दोस्तों. Recently, Israel and UAE have signed their first free trade agreement to enhance trade and commercial ties. On the occasion of 50 years of Stockholm Conference, India or Canada have signed an agreement for cooperation in the field of climate change and environmental protection. और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था 1972 में, फर्स्ट एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस है. इसके बाद एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज बाय टाइम्स हायर एजुकेशन. पहला प्लेस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को जाता है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर रैंक 42nd एंड 4 इंडियन इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग टॉप 100 दोस्तों. इंडिया का रामकृष्ण मुखविल्ली is the first Indian to get global recognition for water management by United Nations Global Compact. US has become the first country in the world to pass a right to repair law for digital electronics. It will require manufacturers to make tools, information and software available to consumer and independent repair shops. Ecuador, Mozambique, Malta, Japan and Switzerland have been elected as non-permanent members of United Nations Security Council for 2023-24. Indian diplomat Amandeep Singh Gill has appointed as its ambassador for digital technology by UN Secretary General Antonio Guterres. Okay, this is also important. The 12th Ministerial Conference of the World Trade Organization has been started from 12 June in Geneva, Switzerland. कहाँ पे हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था. यहाँ पे इंडियन डेलीगेशन जो है हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री जो थे पीयूष गोयल, उन्होंने लेड किया था. फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया EU have launched security and defense consultation in Brussels, the capital of Belgium. Okay. The consultation was co-chaired by Somnath Ghosh, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, एंड संदीप चक्रवर्ती है दोस्तों मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी. Recently, India and Israel have signed vision statement to enhance cooperation in the field of defense sector. QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें 2023 की है ये. टॉप प्लेस जाता है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 3 इंडियन इंस्टीट्यूट्स इन टॉप 200 और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर इज 155 रैंक दोस्तों. IIT बॉम्बे 172, IIT दिल्ली 174. इसके बाद AR रहमान हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया UK टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर प्रोग्राम विथ एम्स टू बूस्ट कोलैबोरेशन अमॉन्ग emerging artists of both of the countries. Next, 3 MOUs have been signed by Indian Vice President M. Venkaiah Naidu during his visit to Senegal. For cultural exchange हो गया, वीज़ा फ्री पासपोर्ट हो गया और कोऑपरेशन इन यूथ अफेयर्स हो गया दोस्तों. ठीक है, हमारे इंडियन वाइस प्रेसिडेंट ने साइन किया था. नेक्स्ट है द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया एस जयशंकर होस्टेड इंडिया आसियान फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली, और इसकी जो थीम बताई गई है बिल्डिंग ब्रिज इन द इंडो पैसिफिक दोस्तों. 2022 has been marked as year of India ASEAN friendship. उसके बाद है द फाउंडेशन स्टोन फॉर हाईटेक पार्क was laid in Khulna, Bangladesh with the help of India. This park will promote technology based industry. 12 high-tech parks will be set up in Bangladesh under India's line of credit. Okay. Next, 110th session of International Labour Conference was held in Geneva, Switzerland. India's Labour Employment Minister Bhupendra Yadav addressed the conference. Recently, Australian researchers have discovered 4,500-year-old
द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट दोस्तों. सो इट इज स्पीसीज ऑफ सी ग्रास विच हैज़ बीन नेम्ड पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस. Asia's Security Conference Shangri-La Dialogue was held in Singapore, where 40 countries including India have participated in it. Okay. उसके बाद recently a resolution on multilingualism was passed in the United Nations General Assembly, जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को पहली बार मेंशन किया गया है. कौन सी लैंग्वेज को? हिंदी लैंग्वेज को. ठीक है. और ये जो ऑफर है प्रपोज किया गया था एंडोरा के द्वारा, इट विल प्रमोट यूज ऑफ हिंदी, बंगाल, उर्दू लैंग्वेजेस इन ग्लोबल कम्युनिकेशन. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ऑन द occasion of Buddha Purnima, 4 relics of Lord Buddha belonging to Kapilavastu will be displayed at Batsangan Temple in Mongolia. उसके बाद है 8th IPU Global Conference of Young Parliamentarians. कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? इजिप्ट में हुआ था दोस्तों. क्या टॉपिक रखी गई थी? क्लाइमेट चेंज के बारे में रखा गया था. और नागालैंड के फर्स्ट फीमेल राज्यसभा MP जो फांगवान कोन्याक है, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इसको. 12th High Speed Guard Boats has been handed over to Vietnam by Rajnath Singh during his visit to Vietnam. Next आता है हमारा May का month. India and Germany have jointly declared to form a task force on green hydrogen in the field of renewable energy. उसके साथ साथ इन्होंने जो है ट्रायंगुलर कोऑपरेशन डेवलपमेंट की भी बात की है इंडिया और जर्मनी ने. इंडियन ऑरिजिन नंद मूलचंदानी हैज बीन इलेक्टेड एज फर्स्ट चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ द यूएसए. CIA जिसे हम कहते हैं ना, यूएसए का. हमारे नंद मूलचंदानी जी को फर्स्ट चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर इलेक्ट किया गया है. ओल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज नेम बैक लॉन्ग पेडेस्ट्रियन ब्रिज हैज बीन बिल्ट इन वियतनाम. इट्स लेंथ इज 632 meters and height is 150 meters. Recently, South Korea has become the first Asian country to join NATO Cyber Defense Group दोस्तों. And the meeting of regional anti-terrorist structure of SCO RATS was held in New Delhi. और इंडिया ने चेयरमैनशिप किया था 2021 में फॉर 1 year. द मेन फोकस रखा गया था तालिबान रिजीम जो अफगानिस्तान में हुआ था. इन ए मीटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड जनरल असेंबली हेल्ड इन मनीला, फिलीपींस, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी फोरम. याद रख लीजिए, ये इसे कहा जाता है. रिसेंटली सऊदी अरेबियाज पेट्रो कंपनी अरामको हैज ओवरटेकन एप्पल to become the world's most valuable company. Aramco has reached the market value of 242 trillion दोस्तों. ठीक है. नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. कौन है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट? श्री भगवंत कुबास है. इनका नाम भी याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम इंडिया पार्टिसिपेटेड इन इंटर सोलार यूरोप इवेंट जो इंडो और जर्मनी के बीच में हुआ था. द 15th यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डेजर्टिफिकेशन. ओके, ये कहाँ पे हुआ था? अबिडजान, कोटे डिवोरे. ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, इनका नाम भी याद रख लीजिए दोस्तों, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था. ऑन द ओकेजन ऑफ बुद्धा पूर्णिमा ऑन May 16, 2022, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिटेड लुम्बिनी, द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा. कहाँ पे है बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा? आपको सेपरेट पूछेगा तो आंसर है लुम्बिनी. ड्यूरिंग दिस 6 agreement was signed in the field of rock and hydropower between 2 countries. World's longest suspension bridge has been opened for people in Czech Republic. This bridge is situated at height of 95 meters दोस्तों and length is 721 meters. The annual meeting of World Economic Forum was held in Davos, Switzerland. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal led the meeting from Indian side. इसके बाद Belgium has become the first country to make 21-day quarantine mandatory for patients suffering from monkeypox virus. This is also important. Union Health Minister Mansukh Mandaviya addressed the 75th World Health Assembly held in Geneva on behalf of India. एंड मनसुख मंडाविया जी यूनियन मिनिस्टर जो हेल्थ हैं और केमिकल फर्टिलाइजर्स के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने दोनों मिलकर जॉर्डन विजिट किया था दोस्तों फॉर इन द फील्ड ऑफ फर्टिलाइजर्स में साइन करने के लिए. 3 Indians हैव इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल. कौन? करुणा नंदी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं. गौतम अदानी जी बिजनेसमैन हैं दोस्तों. खुर्रम परवेज, कश्मीर ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ के उनके मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में इनको ये किया है. 7th मीटिंग ऑफ कल्चरल मिनिस्टर ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज वॉज होस्टेड बाय चाइना, इन विच मीनाक्षी लेखी, Ministry of State for Culture and External Affairs from India, participated. India was awarded the Country of Honor at the Cannes Film Festival जो कि फ्रांस में हुआ था. Next, on May 24, Quad Summit was organized in Tokyo, Japan, in which Quad countries जैसे इंडिया, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया था दोस्तों. They discussed about the China and Solomon Islands, Russia and Ukraine और Indo-Pacific region. Recently, Sweden and Finland have submitted application to join NATO due to Russia-Ukraine war. Both these countries become ready to join NATO जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन है.
कि इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1949 में, हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स दोस्तों। बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी गेव हर असेंट टू इंडिया टू परमिट द यूज ऑफ चिटागोंग पोर्ट दोस्तों। Recently, India contributed $8 million to the Hindi UN project to promote the use of Hindi in the United Nations and to bring awareness about global issues to Hindi-speaking people. PM Modi participated in the recently organized the Indian Nordic Summit in Copenhagen, capital of Denmark. He has also visited to the Nordic countries. Cooperation in the field of climate change, renewable energy, blue economy, etc. were discussed in the conference दोस्तों। After Russia exit from the United Nations Human Rights Council, the Czech Republic was elected as its new member country and UNHRC जो United Nations Human Rights Council है उसको establish किया गया था 2006 में by United Nations General Assembly वालों ने किया था दोस्तों। Nepal's mountaineer Kami Rita Sherpa has set a record for climbing Mount Everest for 26th time. This is very very important. The statue of Sardar Vallabhbhai Patel has been unveiled in Canada's Sanatan Mandir. The event was addressed by Prime Minister Narendra Modi virtually. The Adani Group for the first time acquired franchisee ownership rights in the T20 competition in the United Arab Emirates दोस्तों। The Brazilian landscape garden CTO Roberto Burle Marx has been given the place in the list of UNESCO World Heritage list. The world first taxi flying airport and vertiport has been opened in England. और एक रिपोर्ट आ गया है इंपॉर्टेंट, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस की बात करें जो कि रिलीज़ किया गया है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। ग्लोबली मोर देन 40 मिलियन पीपल हैव फेस्ड द वर्स्ट लेवल ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन 2021 दैन 2022। मोर देन 193 मिलियन पीपल इन 53 कंट्रीज हैव फेस्ड अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी दोस्तों। अफ्रीकन कंट्री इजिप्ट हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू इम्पोर्ट 5 लाख टन्स ऑफ व्हीट फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट अप्रैल में आ चुके हैं। रिसेंटली इंडियन ऑरिजिन साइंटिस्ट डॉक्टर कमल बावा वॉज सेलेक्टेड एज अमेरिकन नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस। डॉक्टर इयान फ्राई हैज़ बीन अपॉइंटेड एज क्लाइमेट एक्सपर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। और इयान फ्राई होल्ड्स द डुअल सिटीजनशिप दोस्तों, तुवालू का भी और ऑस्ट्रेलिया का भी। इंडिया साइंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया, ECTA जिसे हम कहते हैं ना। और इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ नेम्ड द येलो टूलिप फ्लावर एज मैत्री ड्यूरिंग हिज फर्स्ट विजिट टू नेदरलैंड्स। Ecuador has become the first country in South America to give legal rights to wild animals. The United Nations Food and Agriculture Organization has recognized the Indian cities Mumbai and Hyderabad as 2021 tree cities of the world दोस्तों। Okay, and tropical cyclone Meghi has created destruction in Philippines, displacing millions दोस्तों। destruction है ये, DE आना चाहिए यहाँ पे। Okay, Indian origin US Navy officer Shanti Sethi has been appointed as defense advisor to US Vice President Kamala Harris ji. India participated as a guest of honor country in the Paris Book Festival, which held from 21st April to 24th April. Recently, Guadalajara, city of Mexico, has been named as World Book Capital 2022 by UNESCO. The world's largest cyber defense exercise organized by NATO countries was hosted by Estonia. दोस्तों कौन? Estonia. According to the Trends in the World Military Expenditure Report 2021, which is released by SIPRI, India ranked third after USA and China in terms of military expenditure. Founder of Tesla company and SpaceX, Elon Musk has recently bought social media site Twitter for $44 billion. This is also important. The 21st World Congress of Accountants to be held in November will be hosted by India for the first time. 6,000 accountants from 130 countries will participate in this event दोस्तों। According to recently released report, Delhi airport has been ranked 3, okay, third rank है ये, in the list of busiest airport in world. Atlanta airport has topped the list. India and Finland have decided to set up virtual network center on quantum computing. Through this, new scientific research will be encouraged in the country. Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Nepal Sher Bahadur Deoba have inaugurated the rail network between Jayanagar to Bihar and Kurta in Nepal दोस्तों। Central African Republic became the second country to recognize Bitcoin as its official currency. Or India's Bhim UPI has been approved in the United Arab Emirates. Now Indian tourists will be able to pay the NeoPace terminal using this. Okay, याद रख लीजिए। और India has been elected to the 4 key bodies of United Nations Economic and Social Council for 4 years. 2+2 dialogue between India and USA was held in Washington DC. In this, India External Affairs Minister S. Jaishankar and Defense Minister Rajnath Singh met US Secretary of State Antony Blinken and Defense Secretary Lloyd Austin. The United Nations General Assembly has expelled Russia from United Nations Human Rights Council. ठीक है, अर्लियर इन 2011 लीबिया को टर्मिनेट किया गया था। ओके, अभी रशिया को टर्मिनेट कर दिया गया
Ketanji Brown Jackson has become the first black woman to be elected as judge of US Supreme Court. Iceland has been conferred with a golden certification by UNDP for its efforts to achieve gender equality. Forbes बिलियनर लिस्ट की बात करें, पहला प्लेस जो है एलॉन मस्क को जाता है टेस्ला, सेकंड प्लेस जाता है जेफ बेजोस को, और इंडिया के जो मुकेश अंबानी है वो 10th रैंक है दोस्तों. इनका कितना रैंक है? 10th रैंक है. ठीक है. Recently, China has signed a security agreement with Solomon Islands. After this, US announced to open its embassy in Solomon Islands. India has announced to set up education and skill development working group with US. International Water Week Water Summit 2022 was organized in Singapore. G. Ashok Kumar, Director General, a National Mission for Clean Ganga from India, has been participated. London-based company Nexo has launched the world's first crypto-enabled payment card. This new type of credit card will work on cryptocurrency. Serum Institute founder Cyrus S. Poonawalla stood first in the recently released Harun Global Healthcare Rich List 2022. The Colombo Defense Conclave virtual conference was organized by National Investigation Agency of India. Next आता है हमारा March 2022. The Financial Action Task Force has included UAE in the grey list. It has been included in the grey list as the UAE has not taken any concrete step to stop terrorists from hiding their assets. यानी जो भी टेररिस्ट हैं उनके ज़्यादातर assets आपको UAE में देखने को मिलेंगे दोस्तों. ओके, इसीलिए यूएई को ग्रे लिस्ट में डाला गया है. FATF के जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1989, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस है. ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म एक्सेट्रा. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय सिप्री, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया हैव बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर रेस्पेक्टिवली. द यूएसए इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर while India ranked 23rd in global arms export. The Indian ambassador in Madagascar inaugurated Mahatma Gandhi Green Triangle Park दोस्तों as a part of Amrit Mahotsav of Independence. The 14th India-Japan Annual Summit was held in New Delhi. The summit was not held in 2020 and 2021 due to COVID pandemic दोस्तों. इसके अभी हुआ है, 2022 में हुआ है. US President Joe Biden named Colombia as a non-NATO ally. And United Nations declared March 15 as an International Day for Combating Islamophobia. Recently, DRDO test fire surface-to-surface supersonic cruise missile BrahMos from Andaman Nicobar. Several European countries, including the USA, imposed economic sanction on Russia. At the same time, the IOC has withdrawn with the top Olympic honor from President of Russia. दोस्तों याद रख लीजिए. Okay. Next, Indian environmentalist Arushi Verma was elected to represent India for 2041 Climate Force Antarctica campaign. The campaign aims to combat climate change and raise awareness for the conservation of Antarctica. Global Home Price Index 2021 जो कि रिलीज किया गया था नाइट फ्रैंक इंस्टीट्यूट के द्वारा, पहला प्लेस है टर्की, रैंक ऑफ इंडिया है 51 दोस्तों. वर्ल्ड बैंक इशूज फर्स्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर स्पीसीज ऑफ ब्लैक राइनोसोरस इन अफ्रीका. It is $150 million bond for 5-year period दोस्तों. The bilateral summit between India and Australia was held in March 21, 2022. During this, Australia announced the investment of 1,500 crore in India. Important. इसके बाद यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया inaugurated ब्रिक्स वैक्सीन एंड रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर. द प्रपोजल इज टू सेटअप वॉस ये किसने प्रपोज किया था? साउथ अफ्रीका ने दोस्तों. ओके, 2018 में ये आया था. Recently, North Korea tested Hwasong 17 ballistic missile, and this missile has been named Monster Missile. दोस्तों याद रख लीजिए. तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि मॉन्स्टर मिसाइल किसने टेस्ट किया था? नॉर्थ कोरिया ने. ड्यूरिंग द यूक्रेन रशिया वॉर देयर वाज ए फायर एट द ज़ेपोरोजिया न्यूक्लियर प्लांट इन यूक्रेन. इट इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट इन यूरोप. Germany and Singapore have decided to create net zero water infrastructure for water conservation in India. Companies from Germany and Singapore will build water infrastructure in India that consume less water and extracts carbon from water. उसके बाद Feb 2022 की बात करें, Dubai has announced the launch of world first hydrogen powered flying boat, the Jet. It will be able to carry 8 to 12 passengers. Okay. Canada has become the first country in the world to approve the use of plant-based COVID-19 vaccine. This vaccine has been named Covifense. Okay. Next, TomTom traffic index की बात करें, list of most congested cities in the world. पहला प्लेस जाता है इस्तांबुल टर्की को. सेकंड जो द सिटी ऑफ मुंबई का रैंक जो है 5th है दोस्तों, 5th रैंक है, इंपॉर्टेंट है. एंड बेंगलुरु इज 10th एंड दिल्ली इज 11th दोस्तों. ओके, ट्रैफिक इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं. सही में बहुत ट्रैफिक होती है यार बेंगलुरु में भी. आई थिंक इसको 10th नहीं 5th या 6th में रखना चाहिए था, बहुत ट्रैफिक होती है. ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 रिलीज बाय इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट. पहला प्लेस जाता है नॉर्वे, पोजीशन ऑफ इंडिया है 45th दोस्तों. ओके. नेक्स्ट, द वन ओशन समिट जो कि हुआ था फ्रांस में फ्रॉम February 9 to 11.
which was attended by heads of state of several countries, including the Indian Prime Minister. Israel has become the first country in the world to allow drones to fly in civilian airspace. The Hermes Starliner drone can fly at altitude of about 7,600 meters. India signed a roadmap for enhancing bilateral cooperation on blue economy and ocean governance with the France. Indian Air Force Light Combat Aircraft Tejas performed the Singapore Air Show held from 15 to 18 February 2022. Quit Tobacco app launched by World Health Organization to help tobacco users to leave tobacco and motivate them to set a goal. Quit Tobacco app है. Russian President Vladimir Putin announces two new independent countries in the separatist region of Ukraine, namely Donetsk and Luhansk. Okay. उसके बाद इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करें, इशू किया गया था यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पहला प्लेस जाता है यूएसए को और इंडिया का रैंक क्या है दोस्तों 43 है. नेक्स्ट, इंडिया ASEAN हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी was held on February 7 to 8. It was organized by Minister of Energy and Minister of External Affairs. The fourth Quad Foreign Minister meeting was held in Melbourne, Australia on February 11. Establishment of Quad is 2007. Member कौन है? India, Australia, Japan and US दोस्तों. The world's most beautiful building museum of the future was opened in Dubai, and the havoc of tropical cyclone Batsirai was observed in Madagascar दोस्तों. क्या नाम है इसका? Batsirai. Madagascar is an island country located on the east coast of Africa in the Indian Ocean. ठीक है. So India and the United Arab Emirates signed a comprehensive economic partnership agreement covering goods, services and digital trade, among others, that will allow 90% of country export on duty-free access to Emirates. Under the India-UAE trade agreement, India will set up first IIT outside the country in the UAE. This is also important. Canadian Prime Minister Justin Trudeau has declared a national emergency due to protest against government दोस्तों. Nepal has become the first country to adopt India's UPI system. This system will promote digital transaction in Nepal. Australia has listed Kerala as endangered species. Sorry, koala. Sorry. Okay, not Kerala. Kerala तो एक state है. Australia has listed koala एक endangered species. The koala is a mammal that inhabits in some places. Okay, in Australia. नेक्स्ट, जापान लॉन्च इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन. इट्स ट्रेल विल बी कंडक्टेड इन मार्च. ठीक है. और जापान हैज सेट ए टारगेट टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2050 दोस्तों. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी जिसे कहा जाता है ऑर्गेनाइज 21st वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऑन February 16 to 18 in New Delhi, India. Indian telecom company Airtel has joined CME, okay, WE6, the undersea cable system जो कि CME कहा जाता है, will connect Singapore, France, which includes 12 other member besides Airtel with undersea cables globally. मतलब पानी के अंदर से सब कनेक्ट किया जाएगा. Indian company Reliance Jio has tied up the India Asian Express undersea cable system. The cable system will connect India to Maldives. United States President Joe Biden has designated Qatar as a key non-NATO ally of the US. The 35th African Union Summit was held in Ethiopia. The summit was focused on security and global pandemic दोस्तों. India concludes the first round of negotiation for the free trade agreement with UK. During this, 26 policies were covered. The first yoga festival in the Gulf country was held in Saudi Arabia. More than 1,000 people participated in this festival. India has secured the top position in the ongoing Salesforce Global Digital Skills Index 2022. The index was released based on readiness of citizen in the learning digital skills. A woman in the US has become the first woman and third person to recover from HIV. She was treated through stem cell transplantation. February 1, the new year began in China, which is named as Year of the Tiger. It will end on January 21st, 2023. यानी next month में end हो जाएगा. Turkey has changed the name of the country to Turkey दोस्तों. The United States has announced the opening of its embassy on the Solomon Island to curb China's influence. The Solomon Island is an island country located in the Pacific Ocean, east coast of Papua New Guinea. French President Emmanuel Macron announced French military withdrawal from the African country of Mali after 9 years. France deployed troops to Mali against jihadis in 2013. तो जनवरी दोस्तों, US IT company Apple becomes the first company to have share market value of $3 trillion दोस्तों. The 5-day Davos Summit of the World Economic Forum was launched virtually on January 17. Theme था इसका The State of the World. A volcanic explosion occurred in Tonga, an island nation in the southern Pacific Ocean. It is located near New Zealand.
Indonesia Parliament has approved bill to relocate the nation's capital from Jakarta to jungled area of Kalimantan on Borneo Island. The government of Kazakhstan has declared the state of emergency due to rising prices of LPG in the country. The South American country of Peru declared a 90-day environmental emergency due to oil spill in the coastal areas. 6,000 barrels of crude oil leaked off Peruvian coast from Spanish energy firm Repsol. Okay. Indian Prime Minister Narendra Modi hosted the first ever India Central Asia Summit. The summit began with 30th and 30th anniversary of India Central Asian relation. The world's largest canal lock was built at Ijumuddin port of Amsterdam, Netherlands का है दोस्तों. The canal lock is 500 meters long and 70 meters wide. Okay, जहाँ पे आपको कार्गो शिप्स भी आराम से जा सकते हैं. India announced $900 million loan assistance to provide financial assistance to Sri Lanka. The first BRICS Sherpa meeting was held on January. कब हुई थी ये? 18 को हुई थी, 18-19 को. किसने शेयर किया था? चाइना ने. एंड हमारे इंडिया की तरफ से संजय भट्टाचार्य जी पार्टिसिपेट किए थे दोस्तों. The Oxford University declared anxiety as a children's word of the year for the year 2021. The US Treasury has minted coin featuring poet Maya Angelou, the first black woman ever featured on the US 25-cent coin known as quarter. China has now also created the first artificial moon after the artificial sun, which will create atmosphere of low gravity using magnetism. Prime Minister Narendra Modi has topped the global rating among the world leaders released by the Morning Consult Political Intelligence on the list of 13 world leaders. The government of Mauritius has announced to name a major metro station after Mahatma Gandhi. The decision was taken by Mauritius to express gratitude for the many ongoing projects in Mauritius with India's financial support. Okay. The Australian government announced to name the island of Aspen in the Lake of Canberra after the Queen Elizabeth II. The decision was taken by Australia to commemorate accession of Queen Elizabeth II. Scientists from China have confirmed the Neocov virus that spreaded in bats in South Africa. Pakistan launches its first national security policy as okay. And David Bennett, the 57-year-old patient of USA with terminal heart disease, made history as the first person to receive genetically modified pig's heart. इसे transplant किया गया. A new variant of COVID-19 B.1.C40.2 जिसे हम IHU भी कहते हैं has been identified in France. Dr. Sarah Gill became the first transgender doctor in Pakistan. A new species of rain frog discovered in Panama jungle has been named after Swedish environmental activist Greta Thunberg. The new species will now be called Pristimantis Greta Thunberg. A new variant of COVID-19 Delta Cron has been defected in European countries of Cyprus. Okay. Better Health Smoke Free campaign launched by the UK, objective to make smokers aware of ill effects of smoking and to urge them to give up the smoking. Antigua and Bermuda became the 102nd member nation to join the International Solar Alliance. Or India and Sri Lanka have signed an agreement for redevelopment of Trincomalee oil tank complex. Under this, total of 99 oil tankers has been developed, out of which Sri Lanka oil company will have 51% and Indian company will have 49% share. The world's first luxury hotel for camels has been built in Saudi Arabia, where camel will get all the facilities. Okay, for the first time in Dubai, Infinity Bridge for traffic was launched. The shape of this bridge is similar to mathematics symbol infinity and has a 6 lane. कहाँ पे है? दुबई में लॉन्च किया गया था. Belgium, Jara Rutherford has become the youngest woman 19 years to fly alone in the world. She traveled distance of 51,000 kilometers in 155 days and travel about 52 countries. दोस्तों. Australia has implemented the online safety bill. The bill addresses the abuses and cyber threats on social media against the adults. चलिए दिसंबर 2021 तक हम आ चुके हैं. टाइम मैगजीन हैज डिक्लेयर्ड टेस्ला कंपनी सीईओ एलॉन मस्क हैज द पर्सन ऑफ द ईयर 2021. लीना नायर जो कि चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर है ऑफ यूनिलीवर हैज बीन नेम्ड एज न्यू ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फ्रेंच फैशन हाउस चैनल. शी इज अ सेकंड इंडियन ऑरिजिन वुमन टू टेक ओवर एज ए ग्लोबल सीईओ आफ्टर इंदिरा नोई पेप्सिको. New Zealand announced to make its country completely smoke-free by 2027. Malta has become the first EU country to legalize the use of cannabis for the person above the age of 18. Rumba, a musical genre and dance common in urban areas of Democratic Republic of Congo and Republic of Congo, has been included in UNESCO Cultural Heritage List. The world's first floating city is being built in Busan, South Korea. The havoc of Typhoon Roy was seen in
Siargao Island of the Philippines. Haiti famous freedom soup, Jomo soup, has been included in intangible UNESCO cultural heritage list. This is also important. Indian origin, Ujra Zia has been appointed by US as a special coordinator for Tibetan issues. United Nations and the World Health Organization have declared 27th December as International Day of Epidemic Preparedness. Egypt joined the BRICS New Development Bank as a member. Apart from the BRICS country, Egypt became the 4th country to join. Other कौन से हैं? बांग्लादेश, यूरागे हैं एंड UAE हो गया दोस्तों. So India has sent 500 tons of food assistance to Mozambique under the Kesari Sagar mission. As per Hunun report released in December 2021, India ranked 3rd in the world in terms of unicorn companies. The United States in the first place and China is the second place. The United Nations General Assembly has granted observer status to International Solar Alliance. India has joined Trioca group of G20. Apart from India and Indonesia, the Italy is also included. The UAE became the first country to declare 4.5 day work week. दोस्तों, India and Bangladesh have decided to celebrate December 6 as Maitri Divas. Indonesia, Semeru volcano on Java Island erupted, spewing at 2-kilometer high ash column. The Dubai government has become the first government in the world to become 100% paperless. All internal and external process of Dubai will carried out digitally. Switzerland has approved the use of suicide machine named Sarko in the country. India was re-elected as member of International Maritime Organization Council for the year 2022-23. Germany has launched world's first driverless train. It has been developed by German rail operators Dutch Bahn and Siemens Company. याद रख लीजिए, ठीक है. नेक्स्ट नवंबर 2021 की बात करें, बिल टू डिक्लेयर नेशनल हॉलिडे इन द कंट्री ऑन occasion of Diwali was introduced in US Parliament. The UK has approved the world's first pill, Molnupiravir, for the treatment of COVID-19. The UK government released a 5-pound coin on the occasion of Deepavali to highlight the life and legacy of Mahatma Gandhi. दोस्तों, Australia, UK and USA have signed the Nuclear Submarine Alliance Agreement, which has been named as AUKUS Agreement. Pravin Sinha, Special Director CBI, was elected as Asia's representative to Executive Committee of International Criminal Police Organization, Interpol जिसे कहा जाता है. और इसराइल्स का जो तेल अवीव है has been ranked first in the list of world's most expensive cities. This is very very important, याद रखिए. Released by London Economist Intelligence Unit. China has beat the USA to become the world's richest nation according to new research report by management consultancy McKinsey and Company. Barbados has become the completely republic free from the colonial rule of UK. Damesh Chandran Mason has been elected as its first president. Okay, so this is about all international affairs, international events का जो one liner है वो हम लोगों ने complete कर लिया है दोस्तों. Okay, next we will move to defense and economy, whatever the important current affairs we will cover, and then we will also cover the MCQs of the editorial. Okay, then we will start the speedy current affairs also. तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों.